Guys, I'm Dr. Utkarsh, and today I'll be sharing my knowledge about fusion beat and capture beat, which I was very unsure of in my preparation for NEETPG. So I'm starting this channel for clearing some concepts which were very tough for me, and I hope it will be helpful for you as well. So who am I? I'm Dr. Utkarsh Dubey, MBBS pass out from Medical College Hospital, Kolkata, and I've passed my NEETPG this year with an All India rank of 1227. So let's begin. So before we start, why are we reading this? Because these questions are somewhat tricky and have been repeated sometimes in some of the other exams. So let us begin. So I'll give you a gist in the next 1 minute. I'll give you the gist of this whole PDF. So it will be very clear for you to understand. So why are we studying them? Because it comes under the purview of ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia can be identified with wide complex QRSs. Alright, so how do we know that it is a fusion beat or capture beat? First of all, ये terms बहुत common नहीं है. We don't read them quite often, and it is not a very common finding seen. But these are very commonly asked in the exams. So as the name suggests, fusion beat मतलब कुछ fuse हो रहा होगा. क्या fuse हो रहा होगा? तो you know that ventricular tachycardia is due to a focus, vibrating focus in the ventricle. वो beating focus in the ventricle वो beat करेगा तो it will generate a wide complex QRS. अगर वो wide complex QRS के साथ ऐसे नोड से जनरेट किया हुआ नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स अगर दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली जनरेट हो जाता है और फ्यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन बीट. सो व्हाट आई मीन टू से इज if a normal QRS generated from the SA node merges with a wide complex QRS generated from the focus of the ventricular tachycardia, then that fusion thing, that wave is known as fusion wave. तो fusion beat. तो fusion beat is now clear. Fusion beat का एक दूसरा नाम भी है, that is it is known as Dressler's beat. ठीक है, one entity is clear. The second entity is capture beat. Capture beat is also seen in a setting of ventricular tachycardia. So what you will essentially see in the ECG is a wide complex QRS will run in the background, and suddenly in between you will notice a normal QRS complex in a setting of ventricular tachycardia, as if कि पूरा सब कुछ diseased है but एक normal सा QRS बीच में आ गया in a wide QRS complex का territory. So that will be an abnormal finding for you. That is known as capture beat. Why is it called capture beat? Because the SA node is capturing the ventricle in a setting of ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia में the focus of ventricular tachycardia is generating wide QRS complex. जो focus है जो ventricle में है तो wide complex QRS generate कर रहा है, but एक SA node ऐसा fire किया कि wide complex QRS के बीच में एक normal सा QRS complex generate हो गया. So essentially the SA node is capturing the ventricle. So that is why it is known as capture beat. So let us now see both of these in the ECG. पहले आप पहचानो कि what is marked in the given ECG. मैं zoom कर देता हूँ. So here you will see this is a wide complex QRS. This is also wide complex QRS, wide complex QRS, wide complex QRS. But here you see यहाँ पे wide complex QRS के बीच में something is fusing. वाइड कॉम्प्लेक्स QRS के साथ एक नैरो कॉम्प्लेक्स या फिर नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स फ्यूज कर रहा है, तो दिस विल बी फ्यूजन बीट. अब यू विल बी कंफ्यूज्ड कि फ्यूजन बीट है कि कैप्चर बीट है, तो लेट अस नो मोर अबाउट देम. यही मैं बोल रहा था कि व्हाई इज इट कॉल्ड फ्यूजन, बिकॉज ऐसे नोड नॉर्मल QRS फायर करता है एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का फोकस जो है वो वाइड QRS कॉम्प्लेक्स फायर करता है. तो beat from the SA node and beat from the focus are merging to generate the fusion beat. So let us see. Here I have marked in the yellow circle, you can see wide QRS complex fusing with a normal QRS complex generating fusion beat. But here you can see wide QRS complexes यहाँ चल रहे थे, wide QRS complexes यहाँ चल रहे थे, बीच में एक normal QRS complex आ गया. So this is essentially this is a normal QRS complex in a setting of wide QRS complexes. ये देख रहे हो आप wide है, तो this is a normal finding, normal SA node का beat. So this is capture beat because
SA node is capturing the ventricle in a setting of ventricular tachycardia. So this is called capture beat. So let us now see in a pictorial format कि ये नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स चल रहा था, ये वाइड QRS कॉम्प्लेक्स आया, तो व्हाट इज जनरेटेड इज फ्यूजन बीट. अब कैप्चर बीट क्या है? कैप्चर बीट मतलब व्हेन यू सडनली सी अ नॉर्मल QRS इन बिटवीन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेव्स, जो कि वाइड QRS वेव्स थे, वाइड QRS वेव्स के बीच में इफ़ यू आर सीइंग अ नैरो नॉर्मल, नॉट नैरो, नॉर्मल QRS, दैट इज कॉल्ड कैप्चर बीट. सो लेट अस सी, ये वाइड है QRS, ये भी वाइड QRS कॉम्प्लेक्स चल रहा है, यहाँ भी वाइड QRS कॉम्प्लेक्स चल रहा है. अगर बीच में एक नॉर्मल सा QRS जनरेट हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कैप्चर बीट, जो कि इधर थोड़ा सा अनक्लियर था, बट आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको क्लियरली दिखेगा. लाइक इस वाले में तो बहुत ही एविडेंट है कि ये एक कैप्चर बीट है. सो मैंने पिक्टोरिकली दिखाया है, वाइड चल रहा है, वाइड चल रहा है, अचानक से नैरो आ गया, फिर वाइड चल रहा है, फिर वाइड चल रहा है. सो दिस इज़ द थिंग इन बिटवीन इज कॉल्ड द कैप्चर बीट. सो व्हाई इज इट कॉल्ड कैप्चर बीट? कैप्चर बिकॉज SA node is capturing the ventricle which otherwise was governed by the focus in the ventricle. जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का जो फोकस था, एक्टोपिक फोकस था, जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेव जनरेट कर रहा था, उसके सेटिंग में SA नोड ने अपना हरकत दिखाया और SA नोड फायर करा, तो एक नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया इन अ सेटिंग ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कैप्चरिंग द वेंट्रिकल, दैट इज़ वाई कैप्चर बीट. नाउ बैक टू द क्वेश्चन. हमारे को ये पहचानने को दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये क्या है. सो एसेंशियली यू कैन सी एज आई हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पे कुछ फ्यूज़ होता हुआ दिख रहा है. नैरो QRS वाइड QRS के साथ नॉर्मल QRS मर्ज हो रहा है, तो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड फ्यूजन बीट. सो द आंसर विल बी फ्यूजन बीट फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट अस नाउ समराइज. फ्यूजन बीट मतलब फ्यूजन, समथिंग फ्यूजिंग, एक्टोपिक वेंट्रिकुलर फोकस के साथ SA नोड का वेव अगर फ्यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन बीट. एंड कैप्चर बीट मतलब in a setting of ventricular tachycardia, अगर SA node singularly fires and you see a normal QRS complex in a setting of ventricular tachycardia, that is called capture beat. So this is the whole summary of capture beat and fusion beat. And where did I learn all this from? I learned all this from Marrow and YouTube videos, but I've generated a summary of all those things. So thank you for watching. Do leave me some comments about other topics which you want to hear from me, or do give me a feedback of how this video was. Thank you everybody. Thank you so much.